Hi everyone, welcome back to my channel IELTS Domination, and today we're going to discuss IELTS grammar, mainly complex and compound sentences. So we're going to understand the same in detail along with examples. So come, let's get started. Complex sentence, let's understand the basic English meaning and then we're going to understand the IELTS English meaning. So a complex sentence has one independent clause and at least one dependent clause. Okay, so when one independent and dependent clause gets clubbed together with the help of a comma and a conjunction, mainly subordinating conjunction, then that forms your complex sentence. So you can call it as independent or you can say complete. Okay, and dependent means incomplete. Okay, which gets clubbed together with the help of a comma and a subordinating conjunction, then that forms a complex sentence. Independence or complete means that if you use this part separately in any normal daily conversation, the listener will able to identify that what you are trying to communicate. Why? Because it is complete. And incomplete or dependent means that if you're going to use just this part out of the blue in any conversation, the listener will be unable to identify your meaning. Why? Because it is incomplete, it doesn't have any sense. Now what is compulsory is that these two parts should be clubbed together with the help of comma and a subordinating conjunction. So a comma, obviously that acts as your sentence breakage, but when we talk about subordinating conjunction, there are various list of words available under this category, that is subordinating conjunction. But for you guys, I have listed down few words that I feel you can very easily use in your answers. Alright. So acronym for that is 2A, 2W, OBIS. I have posted this multiple times on my Instagram channel, but this is the first time I'm posting it on my YouTube. Alright. So 2A means although and as. Although and as. 2W means whereas and while. OBIS. O for once, B for because, I for if, and S for since. This means that you have to use these words in your answers, but with the help of comma. Comma is compulsory. If you miss that, then again this will not be considered as your complex sentence. Now, two questions that students often come up with. First question, that ma'am, what will happen if we use these words but we do not use a comma with that? Okay, fine, your idea, your sentence will be fine because it is grammatically correct, but at the same time you won't get a higher band score. Why? Because it will be considered as a simple sentence and you do not get a high band score for a simple sentence. Okay. Second question, that ma'am, how many words we should or how many sentences we should form for complex? See, minimum 3 you are good to go. Maximum more you form it, better it is. Now, as I said, that there are other words also that come under subordinating conjunctions. For example, after, for example, before, for example, even though, for example, though. Unless there are multiple words, you can check it on Google if you want, or you can write a comment. I will just drop it. Or I have already posted on my Instagram, so you can check it out. It's fine. But these are the words which can be used more easily according to me. Alright, now come, let's understand the same with the help of examples. So first let's draft a simple sentence. We can go to the store. We can go to the store after we finish the yard work. After we finish the yard work. Now what I'm going to do is I'm going to use same sentence and form it the same as your complex sentence. Okay? It goes like, after we finish the yard work, after we finish the yard work,
comma, we can go to the store. We can go to the store. अब यहाँ पे क्या आ गया, कॉमा, और यहाँ पे हमने क्या करा, आफ्टर. आफ्टर क्या हो गया आपका कंजंक्शन, और कॉमा क्या हो गया सेंटेंस ब्रेकेज. अब देखो, कॉमा विल ऑलवेज कम वेन एवर द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अबाउट टू बिगिन, तो बिफोर दैट यू गोना यूज द कॉमा. अगर हम कंजंक्शन की बात करें, so conjunction can come in the beginning also, it can come in the middle also, depending upon the sentence formation. ठीक है, let me give you one more example जहाँ पे conjunction आपकी बीच में आएगी. For example, you will definitely lose if you don't try. If you don't try. अब यहाँ पे आपकी कंजंक्शन कहाँ आ रही है, बीच में, राइट? और यहाँ पे कॉमा क्या हो गया आपका सेंटेंस ब्रेकेज. सो दीज टू आर द एग्जाम्पल फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कम लेट्स अंडरस्टैंड कंपाउंड सेंटेंसेस नाउ. कॉम्प्लेक्स में क्या था, द वन पार्ट वॉज कंप्लीट, द अदर पार्ट वॉज इनकम्प्लीट, राइट? कंपाउंड में क्या होता है, इन कंपाउंड सेंटेंसेस बोथ द पार्ट्स आर इंडिपेंडेंट. Both the parts are independent. Call it as independent or call it as complete sentences or complete parts. जो बोलना है बोल सकते हो. मतलब if you use these two parts separately in any normal daily conversation, the listener will able to identify that what you're trying to communicate. क्यों? Because ये complete होगा. But एक चीज़ जो common रहती है कि ये जो club होता है किससे होता है, कॉमा के थ्रू होता है. और एक चीज़ जो चेंज होती है कि वहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एंड यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, अब मैंने आपको सबऑर्डिनेटिंग के लिए एक अच्छा एक्रोनिम बताया था, 2A2W ओबिस. फॉर कोऑर्डिनेटिंग वी हैव द एक्रोनिम एज फैन बॉयज. इस पर मैं इतना फोकस इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉमन. अगर आप आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा. ठीक है, फैन बॉयज. अब अगर मैं आपको इसका फुल फॉर्म या पूरी एक्सप्लेनेशन बताऊं, सो F इज़ फॉर, A इज़ फॉर एंड, N इज़ फॉर नॉर, B इज़ फॉर बट, O इज़ फॉर और, Y इज़ फॉर येट एंड S इज़ फॉर सो. इसका मतलब यू हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स इन योर आंसर्स बट विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा. अब दोबारा अगर मैं आपको वो वाले वर्ड्स बताऊं जो आप ज़्यादा ईजिली अपने आंसर्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी दीज वर्ड्स आर एंड, देन इट इज़ बट, देन इट इज़ और, एंड देन इट इज़ सो. मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं ये फोकस नहीं डाल रही कि आपने सिर्फ ये वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ फॉर, नॉर, येट. बट मेरे हिसाब से जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट करे हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आपको यूज़ करने का ऑप्शन या चांस ज़्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, अब आओ हम इसके बिग बार एग्जाम्पल्स देखते हैं. कंपाउंड सेंटेंसेस. ठीक है, फर्स्ट इसके वैसे दिस इज़ रिलेटिवली अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो ये ईजी होता है कॉम्प्लेक्स से. इसकी कंजंक्शंस भी कम हैं, कंजंक्शन ध्यान रखने भी ईजी है, और इसके सेंटेंसेस फॉर्म करने भी कंपैरेटिवली ईजी होते हैं. I like Coke, comma, and Mia likes tea. Mia likes tea. ठीक है, अब ये देखो, I like Coke, complete. Mia likes tea, complete, which gets clubbed together with the help of comma and. ठीक है, and क्या हो गया, conjunction, comma क्या हो गया, sentence breakage. वो रूल सेम रहा that comma कब आएगा, whenever the other part of the sentence is about to begin, just before that. अब एक और करते हैं. She was nervous, comma, but she still went ahead. ठीक है, देखो यहाँ पे भी कॉमा क्या हो गया, सेंटेंस ब्रेकेज, बट क्या हो गया, कंजंक्शन. ठीक है, ए दिस इज ऑल्सो कंप्लीट, this is also complete, which gets clubbed together with the help of comma and conjunction, and thus your compound sentence is formed. ठीक है, अब दोबारा फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन अगर आप ये सिर्फ वर्ड्स यूज़ कर दो, सिर्फ कंजंक्शन यूज़ कर दो, कॉमा ना डालो, तो अगेन आइडिया सेंटेंस गलत नहीं होगा, बट अगेन यू वोंट गेट अ हायर बैंड स्कोर. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटेंसेज यू शुड फॉर्म फॉर कंपाउंड, सेम थिंग, minimum 3 you are good to go. I'm talking this about your essay writing. minimum 3 you are good to go. maximum जितने फॉर्म कर सकते हो फॉर्म करो. बहुत अच्छा वे है आपका ग्रामेटिकल रेंज शो करने का.
सो इट इज़ वेरी स्कोरिंग, ठीक है. अच्छा वे भी है, इट इज़ स्कोरिंग वे, इट इज़ अ गुड वे, एट द सेम टाइम इट इज़ ईजियर वे ऑल्सो, ठीक है. तभी मैं इस पर ज़्यादा फोकस करवाती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस लिंकिंग वर्ड्स वगैरह वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है. अब इफ़ यू नीड मोर कंटेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल आंसर इट फॉर यू ऑल्सो. एंड इवन ऑन आवर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म आई डू कंडक्ट लाइव सेशंस. वहाँ पे रोज़ डेली बेसिस पे कंटेंट अवेलेबल होता है, डेली बेसिस पे कंटेंट पोस्ट होता है, स्टोरीज डलती हैं. सो प्लीज़ फॉलो मी ओवर देयर. माई यूजर नेम इज़ learn_IELTS_Mehak. आई हैव अ फैमिली ऑफ 200K प्लस ओवर देयर, ठीक है. प्लीज़ फॉलो मी. And I even have my Telegram channel. Please again follow me over there also by the name of IELTS Domination itself. And if you want to join for live classes, we even have that. मैं diagram लिख रही हूँ, I'm sorry, IELTS Domination, ठीक है. We even have live classes available, so you can check the same on our website. आपको जो link है वो आपको हमारे description box में मिल जाएगा. And our WhatsApp number is 9+91. This is the country code 8595717981. Okay. कोई भी query होती है, कोई भी doubt होता है, if you want to get access to our ebooks or something, please contact us. I will help you out. Thank you, and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.